गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है राइट टू एजुकेशन। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने आरटीई राइट टू एजुकेशन एग्जाम्शन जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को मिला है, ब्लैंकेट एग्जाम्शन, उस इशू को लार्जर बेंच को जो है रेफ़र कर दिया है। अपनी 2014 की जो रूलिंग को, जिसमें कि उनको ब्लैंकेट एग्जाम्शन मिला हुआ था, उसे क्वेश्चन किया गया है। तो राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 एक इंडिया की कमिटमेंट है यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन की। लेकिन एक कंटेंशियस लीगल क्वेश्चन है कि क्या माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो एग्जाम्प्ट होने चाहिए प्रोविजंस ऑफ द आरटी एक्ट से। तो ये जो डिबेट है, ये टू कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ को बैलेंस कर रही है। आर्टिकल 21A जो इंश्योर करती है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14, और आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 जो ग्रांट करता है माइनॉरिटीज़ को कि वो अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। 2014 की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने रूल किया था कि सेक्शन 12(1)(c) जो आरटीई एक्ट का है, वो जो इसमें कि 25% रिजर्वेशन चिल्ड्रन को है डिसएडवांटेज ग्रुप्स की सभी प्राइवेट स्कूल्स में, वो ऑटोनॉमी ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को इन्फ्रिंज करेगा, इसलिए वो वैलिड नहीं है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर। तो जजमेंट ने लगभग सभी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को, चाहे एडेड हो या अनएडेड, उन सबको आरटीई एक्ट के प्रोविजन से बाहर कर दिया था। लेकिन क्रिटिक्स का कहना था कि ये ब्लैंकेट एग्जाम्शन जो है वो इंक्लूसिविटी को डाइल्यूट करती है। प्रपोनेंट्स का लेकिन ये कहना था कि ऑटोनॉमी जो है वो एसेंशियल है प्रिजर्व करने के लिए यूनिक कल्चरल और लिंग्विस्टिक कैरेक्टर ऑफ माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशंस। तो ये केस का बैकग्राउंड है कि स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ने इंसिस्ट किया कि टीचर्स जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में वो क्लियर करती हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि एक मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड है अंडर सेक्शन 23 ऑफ आरटीई एक्ट। तो टू जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने 2014 की रूलिंग को कहा कि वो अननोइंगली उसने रूलिंग ने फाउंडेशन ऑफ यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन को ख़राब कर दिया है। तो कोर्ट ने कहा कि एग्जेम्प्ट करना माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को फ्रॉम आरटीई फ्रेमवर्क वीकन करेगा विजन ऑफ इंक्लूसिविटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कुछ सेवरल क्रिटिकल पॉइंट्स भी नोटिस किए हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है उन्होंने सीरियस डाउट्स रेज किए हैं कि ग्रांट जो है वो ब्लैंकेट एग्जाम्शन ग्रांट नहीं करनी चाहिए थी। और उन्होंने कहा कि 25% रिजर्वेशन जो है वो एक वाइटल पर्पज़ है सोशल इंक्लूजन उसका। तो आरटी एक्ट जो है उसमें रीइंबर्समेंट भी होती है प्राइवेट स्कूल्स की। तो ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल बर्डन जो है वो सिर्फ इंस्टीट्यूशंस पर आता है। बेंच ने हाईलाइट किया कि लार्जर पर्पस ऑफ द एक्ट जो है वो है इंटीग्रेटेड क्लासरूम्स बनाना, जहाँ पर सभी धर्म के या सभी बैकग्राउंड के लोग बच्चे जो हैं वो पढ़ सकें। तो कोर्ट ने कुछ फ्लैग किए हैं इंस्टीट्यूशंस को जो कि माइनॉरिटी रिकॉग्निशन सिर्फ इसलिए मांगते हैं ताकि वो आरटी एक्ट के ऑब्लिगेशंस को बाईपास कर सके। अब मैटर जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाएगा, जो कि एक लार्जर बेंच बनाएंगे और फिर वो एग्जामिन करेंगे इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को कि क्या उन्हें ब्लैंकेट एग्जाम्पशन मिलनी चाहिए आरटी एक्ट के अंदर या फिर नहीं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं 25th एससीओ समिट इन ट्यांजिन। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पीएम मोदी ने रिसेंटली 25th एससीओ समिट ट्यांजिन चाइना में अटेंड की है, जहाँ पर डिस्कशंस हुई हैं ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के बारे में, काउंटर टेररिज्म के बारे में, पीस एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो 25th मीटिंग जो थी वो, उसमें 20 सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट साइन किए गए। ट्यांजिन डिक्लेरेशन अडॉप्ट की गई है जो कि सेंट्रल पॉलिटिकल आउटकम है। डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2026 टू 2035 जो है अप्रूव की गई है, जिसमें लॉन्ग टर्म प्रायोरिटीज़ और डायरेक्शन बताई गई हैं एससीओ की ग्रोथ की इन द नेक्स्ट 1 decade। रोड मैप दिया गया है फॉर एससीओ एनर्जी कॉपरेशन अंटिल 2030। फिर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को काउंटर करने के लिए भी एक कॉपरेशन प्रोग्राम अनाउंस किया गया है। 4 न्यू एससीओ सेंटर्स जो है इनाग्रेट किए गए हैं डेडिकेटेड रोल्स के साथ, जैसे कि काउंटर करने के लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड चैलेंजेस, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम टैकल करने के लिए, इंफॉर्मेशन और साइबर सिक्योरिटी एनहेंस करने के लिए, और एंटी ड्रग कॉपरेशन के लिए भी। डिसीजंस जो हैं वो एक लिए गए हैं कि एससीओ डेवलपमेंट बैंक भी बनाया जाए, समिट ने अनाउंस किए हैं इनिशिएटिव्स न्यू एससीओ प्लेटफॉर्म्स के लिए, जैसे एनर्जी और सस्टेनेबल ग्रोथ, ग्रीन इंडस्ट्री, क्लाइमेट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, डिजिटल इकोनॉमी, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन। तो एक मेजर ब्रेक थ्रू था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का, जिसमें ऑब्जर्वर स्टेट्स और डायलॉग पार्टनर्स को मर्ज करके अब एससीओ पार्टनर्स कहा जाएगा। तो
एससीओ की जो टैंजेंट डिक्लेरेशन है, इसमें एक्सप्लिसिटली जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था अप्रैल का, उसे कंडेम किया गया है। कंडोलेंसेस भी दिए गए हैं विक्टिम फैमिलीज़ को। अब ये ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि इससे इससे पिछली बार तो जो है, जब डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग थी, तब तो पहलगाम को नहीं मेंशन किया गया था पाकिस्तान की वजह से। लेकिन अब जो है इंडिया और चाइना जो है अपने रिलेशंस को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो इसलिए टैंजेंट डिक्लेरेशन में चाइना ने जो है वो विलिंगनेस दिखाई है कि इंडिया के कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि एनएचएआई की एक कंपनी है, उसने आईसीआईसीआई बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन किया है कंट्री के पहले मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए 84 फी प्लाजा गुजरात में NH-48 पे। तो ये एक बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम होता है MLFF, जिसमें ट्रांजैक्शंस जो है वो फास्टैग के थ्रू और व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू रीड की जाती हैं, हाई परफॉर्मेंस RFID रीडर्स और ANPR कैमरास के थ्रू। तो ये सीमलेस टोल कलेक्शन देता है बिना नीड ऑफ व्हीकल्स को कि वो रुकें एट फी प्लाजा। इससे जो है टोल कलेक्शन भी इम्प्रूव होगा, स्मार्ट, फास्ट और मोर एफिशिएंट नेशनल हाईवे नेटवर्क बनेगा अक्रॉस द कंट्री। तो NHAI आपको पता है इंडिया की प्रीमियर हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटर है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के। इसमें एक फुल टाइम चेयरमैन होते हैं और नॉट मोर देन 5 फुल टाइम मेंबर्स एंड 4 पार्ट टाइम मेंबर्स, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मॉरिटेनिया। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक माइग्रेंट बोट जो है वो सिंक हो गई है मॉरिटानिया के कोस्ट के पास। तो मॉरिटानिया एक कंट्री है नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका की, कंट्री है साहिल रीजन की। वेस्ट सहारा, सेनेगल, अल्जीरिया और माली, ये इसके बॉर्डर कंट्रीज़ हैं। 90% जो इसका लैंड मास है वो विद इन सहारा डेजर्ट है। मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर है यहाँ पर गोएलबल रिशट, जो कि जिसको हम कहते हैं आई ऑफ द सहारा। एक डीपली इरोडेड डोम है जिसमें कई तरह के इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं। सेनेगल रिवर यहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवे है। मच ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो कोस्टल सिटीज़ में रहती है बाय द सेनेगल रिवर। मॉरिटेनिया इंडिपेंडेंट हुआ था फ्रांस से 1960 में। 1981 में मॉरिटेनिया बिकम जो है वो बना लास्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू आउटलॉ स्लेवरी। इस्लाम यहाँ का नेशनल रिलीजन है। अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है यहाँ पर, आयरन ओर, गोल्ड, कॉपर, जिप्सम, फॉस्फेट। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्लोपिडोग्रेल। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर्स का अब ये कहना है कि क्लोपिडोग्रेल जो है वो एक वेल नोन एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन, सबसे इफेक्टिव है इवन एस्पिरिन से भी ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक्स में। तो ये क्लोपिडोग्रेल जो है एक मेडिकेशन है जिसको हम एंटीप्लेटलेट एजेंट कहते हैं। ये ब्लड क्लॉट्स फॉर्म होने से रोकती है। तो इसमें जो है इसकी वजह से रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स रिड्यूस होता है, स्ट्रोक्स भी रिड्यूस होते हैं। तो ये एक्शन ऑफ प्लेटलेट्स को बेसिकली ब्लॉक कर देती है। तो इसमें हार्ट अटैक्स को रोकना, स्ट्रोक्स को रोकना, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ को ट्रीट करना, ब्लड क्लॉट्स को प्रिवेंट करना, ये सब इसके इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। इसको ओरली लिया जाता है विद और विदाउट फूड। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टाइफोन मिसाइल सिस्टम। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जॉइंट यूएस और जापानीज़ मिलिट्री एक्सरसाइज जो है उसमें टेम्प्रेरी डिप्लॉयमेंट होगी टाइफोन इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल की जापान में। तो इसको हम मिड रेंज कैपेबिलिटी सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम कह रहे हैं। ये यूएस फर्म लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। ये इक्विप्ड है SM-6 और टॉमहॉक क्रूज मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए। डुअल कैपेसिटी है इसके पास, जिसकी वजह से ये ज़्यादा इफेक्टिव रहता है सी डिनाइल मिशंस में और प्रिसीजन लैंड अटैक्स में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक इंडियन आर्मी कंटिंजेंट जो है अलास्का के लिए जो है डिपार्ट हो चुकी है 21st एडिशन ऑफ एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूएस। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एयर पोल्यूशन जो है वो इंडिया की मोस्ट सिवियर हेल्थ थ्रेट की तरह सामने आया है और कंट्री की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 3.5 ईयर्स से इसने कम कर दिया है एज पर दी एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025 रिपोर्ट। तो ये एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स जो है मेजर करता है पर्टिकुलेट एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट ऑन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसको डेवलप किया गया है माइकल ग्रीनस्टोन एंड एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो द्वारा। एयर
पोल्यूशन का जो एक्सपोजर है उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है वो ये मेजर करता है। तो अगर हम हाइलाइट्स देखें इस साल की रिपोर्ट की, तो टॉक्सिक एयर की वजह से लगभग ट्वाइस एज मैनी ईयर्स ऑफ जो है वो लूज़ हुए हैं जितना चाइल्डहुड या मटर्नल न्यूट्रिशन से होते हैं। 1.4 बिलियन इंडियंस जो कि एरियाज़ में ऐसे रहते हैं जहाँ पर पॉल्यूशन, सभी के सभी जो इंडियंस हैं 1.4 बिलियन इंडियंस वो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर पॉल्यूशन लेवल WHO के सेफ लिमिट से काफ़ी ज़्यादा है। नदर्न बेल्ट जो है वो वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड जोन है। दिल्ली एनसीआर तो वर्स्ट हिट है। दिल्ली एनसीआर के रेजिडेंट्स तो अपनी 4.74 ईयर्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी लूज़ कर रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से। 46% ऑफ इंडियंस जो है वो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जो जो इंडिया के भी PM2.5 स्टैंडर्ड से जो है जहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन है। साउथ एशिया जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड रीजन है ग्लोबली। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is right to education. This topic is important for your governance section. Supreme Court has referred the issue of right to education exemption for minority institutions to a larger bench. It has questioned its own 2014 ruling which granted them blanket exemption. So we know that right of children to free and compulsory education act 2009 is a cornerstone of India's commitment to a universal elementary education, but a contentious legal question persists. Should minority education institutions protected under Article 30 of the Constitution be exempt from the provisions of the RTE Act? So, the heart of the debate lies in balancing two constitutional guarantees. Article 21A, which ensures free and compulsory education for children aged 6 to 14, and Article 31, that is, which Article 30 Clause 1, which grants minorities the right to establish and administer their educational institutions. So 2014 Constitution Bench had ruled that Section 12 1C of the RTE Act, which mandates 25% reservation for children from disadvantaged groups in all private schools, would infringe upon the autonomy of minority institutions. This judgment effectively excluded all minority institutions, aided or unaided, from the purview of the RTE Act. Critics argue that such blanket exemption dilutes inclusivity. Proponents, however, stress that autonomy is essential for preserving the unique cultural and linguistic character of minority run institutions. So, the reference is arising from appeals challenging the insistence of state education departments that teachers in minority institutions clear the teacher eligibility test, which is a minimum qualification prescribed under Section 23 of the RTE Act. The two-judge bench of the Supreme Court observed that 2014 ruling had unknowingly jeopardized the very foundation of universal elementary education. The court also noted that exempting minority institutions from the RTE framework weakens the vision of inclusivity. So, Supreme Court, while referring the matter to a larger bench, underlined several critical points. First is that the bench held serious doubts about the justification of granting blanket exemption, stating that applying the RTE Act does not erode, let alone annihilate, the minority character of institutions. The judges emphasized that 25% reservation under the Section 12 1C serves a vital purpose of social inclusion. The RTE Act includes reimbursement provisions for private schools, ensuring that the financial burden does not fall solely on institutions. The bench has also highlighted that the larger purpose of the Act is to create integrated classrooms where children of different backgrounds learn together. Okay. The court also flagged that some institutions have sought minority recognition primarily to bypass the obligations under the RTE Act. The matter will now be placed before the Chief Justice of India, who may constitute a larger bench to examine whether minority institutions should continue to enjoy a blanket exemption or not. So the next topic is 25th SCO Summit in Tianjin. This topic is important for your international relations. PM Modi attended the 25th SCO Summit in Tianjin, China, where discussions focused on global governance reform, counterterrorism, peace and security, economic cooperation, and sustainable development. At the 25th meeting, 20 significant documents were signed. Tianjin Declaration was adopted as the central political outcome. A development strategy for 2026-2035 was also approved, outlining long-term priorities and direction for the SCO's growth in the next one decade. A cooperation program to counter extremist ideology within SCO space was also adopted. A roadmap for SCO energy cooperation until 2030 was also adopted. Four new SCO centers were inaugurated with the dedicated roles.
that is countering security threats and challenges, tackling transnational organized crime, enhancing information and cybersecurity, strengthening anti-drug cooperation. So decision was also taken to establish an SCO development bank. So the summit announced initiatives to create new SEO platforms and centers in the fields of energy and sustainable growth, green industry and climate-friendly practices, digital economy and cybersecurity, artificial intelligence, tech innovation, higher education, vocational and technical education for workforce development. So a major breakthrough was also there in structural reforms. For example, observer states and dialogue partners were now merged into a single category of SEO partners. So the SEO Tianjin Declaration has now explicitly condemned the Pahalgam terror attack of India in 2025 April, which killed 26 people. Condolences were also expressed to the victims' family. So earlier, you know that during SEO defense ministers, Pahalgam was omitted due to Pakistan's opposition. But now the relations between India and China have seen signs of thaw. So this Tianjin declaration is seen as a signal of Beijing's willingness to strengthen ties with New Delhi amid US tariff pressures. So the next topic is multi-lane free flow tolling system. This topic is important for your economy section. Indian Highways Management Company Limited, which is a company promoted by NHAI, has signed an agreement with ICICI Bank to implement country's first comprehensive multi-lane free flow tolling system at Choriasi Fee Plaza in Gujarat on NH48. So this MLFF tolling system is a barrier-less tolling system which enables transactions through reading of fastags and vehicle registration number by high-performance RFID readers and ANPR cameras. So it enables seamless toll collection without stopping vehicles at fee plazas. Implementation of MLFF will also contribute towards improving toll revenue collection and creating a smarter, faster, and more efficient national highway network across the country. So, what is NHAI? So, it is India's premier highway infrastructure creator. It's a statutory body under the administrative control of Ministry of Road Transport and Highways. So, it was constituted under the National Highway Authority Act of India Act 1998. It consists of a full-time chairman and not more than five full-time members and four part-time members who are appointed by the central government. The next topic is Mauritania. This topic is important for your international relations. Oh, a migrant boat sank off Mauritania's coast earlier recently. So, Mauritania is a country in northwest Africa. It is a country of the Sahel region. It borders four other regions: West Sahara, Senegal, Algeria, and Mali. Approximately 90% of its landmass is located within the Sahara Desert. The most prominent feature of this region is the Gueleb El Reshet, which is also known as the Eye of the Sahara. It's a deeply eroded dome consisting of variety of intrusive and extrusive igneous rocks. The Senegal River is the most important waterway in the country. Much of the population clings to the coastal cities or by the Senegal River in the south. Mauritania became independent from France in 1960, and it is the last country in the world to outlaw slavery. So, Islam is the national religion here. Mauritania has an abundance of natural resources also, including iron ore, gold, copper, gypsum, and phosphate. So the next topic is clopidogrel. This topic is important for your science and tech section. Doctors now believe that clopidogrel is a well-known antiplatelet medication could be more effective than aspirin for long-term prevention of heart attacks. So clopidogrel is a medication belonging to the class of antiplatelet agents which prevent blood clots from forming. So it is commonly prescribed to reduce the risk of heart attacks and strokes in people and those with a peripheral arterial disease or unstable angina. So it works by blocking the action of platelets. Some of the most common uses of clopidogrel include preventing heart attacks, preventing strokes, treating peripheral artery disease, preventing blood clots after certain medical procedures. So clopidogrel is usually taken orally with or without food. Okay. So the next topic is Typhoon missile system. This topic is important for your security section. A joint US and Japanese military exercise will see the temporary deployment of the Typhoon military intermediate range missile in Japan. Uh, so Typhoon missile system is also called the mid-range capability surface-to-surface missile system. It is manufactured by the Lockheed Martin. It is equipped to launch SM-6 and Tomahawk cruise missiles. It has a dual capability, which makes it particularly effective for both sea denial missions and precision land attacks.
So the next topic is exercise Yuddha Abhyas. This topic is important for your security section. So an Indian Army contingent has departed for Alaska to participate in the 21st edition of the exercise Yuddha Abhyas, which is the joint military exercise held between India and USA. So the next topic is Air Quality Life Index. This topic is important for your environment section. So air pollution has emerged as India's most severe health threat, reducing the country's average life expectancy by 3.5 years, according to the Air Quality Life Index 2025 report. So Air Quality Life Index measures the particulate air pollution's impact on life expectancy. It has been developed by the Michael Greenstone and Energy Policy Institute at the University of Chicago. It combines research on long term air pollution exposure with global particulate pollution measurements. So, the highlights of this year's report include the fact that toxic air robs Indians of nearly twice as many years as childhood and maternal malnutrition, and more than 5 times the impact of unsafe water, sanitation, and hand washing. All 1.4 billion Indians are living in areas where pollution levels exceed the WHO safe limit. The Northern Belt is still the world's most polluted zone. Delhi NCR is the worst hit. Delhi NCR residents, in fact, lose 4.74 years of life expectancy due to pollution. 46% of Indians live in areas which exceed even the PM 2.5 standards of India only. So, South Asia is the most polluted region globally. Okay. So, these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.